Hello. I hope I'm audible and visible both. So we'll wait for 3-4 minutes more and then we'll start. Hello and welcome. Happy Bhai Dooj to everyone. Yes. Good. We have 2-3 minutes. If you have any question only specific to breathing that you can ask. So I'll answer some of them before we start. कुछ अगर सवाल है आपके सिर्फ ब्रीदिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछिएगा so that we can stick to the topic. Where are you? So Diwali के बाद like this is almost like the first time I have come post COVID. तो मैंने सोचा कि मेरे बुआ और मासी थोड़ा पास में रहते हैं तो जस्ट दिवाली के बाद ऐसे मिलने आना होता है तो आई जस्ट केम हियर. आई हैव अस्थमा फ्रॉम पास्ट 20 years. व्हिच ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुड आई डू रेगुलरली? ऑल ऑफ देम. जो भी हम कर रहे हैं सारे कर सकते हो. कैन वी डू दिस सेशन आफ्टर हैविंग व्हाइट गार्ड जूस? या, आई थिंक आफ्टर जूस इट्स एब्सोल्युटली फाइन. While doing box breathing, we have to inhale and exhale through the nose only. Yes, we have to. Unless I give a special instruction to breathe in or out from the mouth, you have to assume that it is always from the nose. When we breathe, air should go in the lungs or stomach. The air does not go in the stomach. The movement happens more in the stomach. Any limitations in breathing practice for asthma? Don't overdo it and don't do it during the difficult. If you are facing difficulty in breathing, don't try to do breathing then. Okay, this is more of prevention than cure. So आप अस्थमा जब चल रहा है, जब इशू चल रहा है ब्रीदिंग का, तब आप बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना करें. जब आपको ठीक लग रहा हो तब आप प्रैक्टिस करेंगे. Does breathing exercise help in psoriasis? To a very small extent, yes. But if you have psoriasis, I would recommend you to go to a Ayurvedic practitioner, doctor, and try विरेचन और वमन. देखो ये जो टाइम चल रहा है अभी, जो चेंज ऑफ वेदर वाला टाइम होता है, इसमें हर साल विरेचन या वमन करना चाहिए. ये हर किसी को करना चाहिए, बट जिनको सोरासिस है वो लोग तो डेफिनेटली ट्राई करें इसको. बहुत फर्क पड़ेगा. For effective results in hypertensive, how long shall we do the breathing exercise? There is no standard guideline for this. Even if you do not have hypertension, still you need to practice breathing. So doesn't matter if you have hypertension, you don't have hypertension, anyways you need to practice breathing. So why to keep your practice only specific to hypertension? कि अच्छा मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो ही मैं ब्रीदिंग करूंगा और नहीं है तो मैं नहीं करूंगा. ऐसे नहीं करना चाहिए. You just need to do it anyways every day for 15 minutes. Okay, so let's start. It's 8:30. Let's keep our eyes closed. We'll start with focusing or just bringing your attention back to the breath. Take a normal deep breath in, breathe out, breathe in, let go, breathe in again, out. Let's start with abdominal breaths. Keep your right hand on the stomach. पेट पर हाथ रख दो, एक हाथ छाती पे रखो. अब मेरा पेट आपको दिखेगा नहीं तो आप अज्यूम करो. आई एम कीपिंग माई राइट हैंड ऑन द स्टमक. ब्रीद इन, पुश योर स्टमक आउट. ब्रीद आउट, टेक योर स्टमक इन. Breathe in, push your stomach out. Breathe out, take your stomach in. We'll do this 10 times. Breathe in. Breathe out. जितना सांस ले सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे. Breathe in again. Breathe out. जितना सांस छोड़ सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा सांस बाहर छोड़ेंगे. Breathe in.
out, in, out, breathe in, breathe out, breathe in, out, in, out, breathe in again, breathe out. Relax. Just keep your eyes closed for some time. Let's continue with box breath. You don't need to open your eyes, keep your eyes closed if you can. The longer duration of less information for you, the better your brain response. मतलब जितने ज्यादा समय के लिए आपके ब्रेन में कम इंफॉर्मेशन जाएगा, उतना आपका ब्रेन ज्यादा पावरफुल बनेगा. ओके, तो आंखें बंद रखते हैं तो आंखें जो इंफॉर्मेशन आता है वो कम हो जाता है सडनली. So it's a great idea to keep your eyes closed. Continue with the box breath. Take a normal breath in, breathe out. For box breath, breathe in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. In, hold, out, hold. In, hold, out, hold. In, hold, out, hold. In, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4, 5, 6. Out, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4, 5, 6. Out, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4, 5, 6. Out, 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4, 5, 6. In,
hold, out, hold, in, hold, out, hold. Relax. Get ready for Brahmari Pranayam. You can keep your fingers in your ears like this. Take a deep breath in, breathe out, make a humming sound. Breathe in. Breathe in. One last time. Relax. Become aware of all the sensations in the body. Get ready for Bhastrika, loose fist in front of your shoulders, elbows close to the body. Anyone with any kind of eye issue or high BP issues, you will not do this or do it extremely slow. Okay? Ready? Normal breath in, breathe out. Together for Bhastrika, breathe in, out, in, out, in, out, in, three, in, four, in, five, in, six, in, seven, in, eight, in, nine, in, 10, in, one, in, two, in, three, in, four, in, five, in, six, in, seven, in, eight, in, nine, in, 10. Apply your Kegel's lock. Pull the muscles around your anal region in. Hold your breath. You can hold your breath after you breathe in, or you can hold your breath after you breathe out. Anything works. Release. Get ready for round two. Take positions. Normal breath in. Breathe out. Together for Bhastrika. Breathe in, out, in, out, in, out, in, three, in, four, in, five, in, six, in, seven, in, eight,
in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Is the signal good? Sorry, I think मेरा भी आवाज. Oops. Sorry for that. अगर अब इंटरनेट ठीक है तो let's continue. Last round of Bhastrika. Together, breathe in, out, in, out, in, out, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. Apply your lock again. Release. Sit comfortable and easy. Now, take a deep breath in. Hold your breath and very slowly breathe out. You can breathe out from the mouth. Let's make a circular movement. Breathe in from the nose, breathe out from the mouth. And you have to breathe in 2 times in, and once you have to breathe out from the mouth as long as possible. So breathe in, breathe out. While you're breathing out, notice the stomach going in, or rather, pull your stomach in. Breathe in again 2 times. Breathe out. Very slowly, notice the stomach going in while you're breathing out. Again, breathe in, breathe out. Pull your stomach in. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Keep pulling your stomach in when you breathe out. Again, breathe in, breathe out. Pull your stomach inside. Again, breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Three times more. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
Breathe in, breathe out. One last time. Breathe in, breathe out. Relax. Now, what we'll do is we'll do very slow, deep breaths with Nadi Shodhan Pranayam. अब आप मान के चलिए कि आपका थोड़ा पेशेंस टेस्टिंग होगा बिकॉज वी विल डू दिस फॉर 5 to 7 मिनट्स. 5-7 मिनट अगर नाड़ी शोधन करना हो तो ऐसे लगने लग जाता है कि समय कब खत्म होगा. ओके, सो गो थ्रू दैट discomfort or rather say that तपना बोलते हैं इसको. प्राणायाम इज कॉल्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ तपस्या. तो बिल्कुल आंखें बंद रखेंगे, मन चाहे जो भी बोले आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. लेफ्ट हैंड इन चिन मुद्रा, यू कैन कीप इट ऑन योर लेफ्ट थाई और नी. Right hand index and middle finger between your eyebrows. Thumb on the right nostril, ring finger on the left. Breathe in from both nostrils together. Close your right, breathe out left. Breathe in left side. Close your left, breathe out right. Breathe in from the right side. Close the right, breathe out left. Breathe in from the left. Close the left, breathe out right. Breathe in right. Close the right, breathe out left. Breathe in. Breathe out. 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 Breathe in.
Breathe out. Breathe in. Breathe out. Halfway through, 50% done. Breathe in again. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Anytime you feel you're tired, shift the hand. Breathe in. Breathe out. 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 Breathe in. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In.
out, in, out. Relax. Eyes are closed. Very slowly and gradually, whenever you feel like, you may open your eyes. जब भी आपका मन करे आंखें खोल सकता है. So what we just did is a very important activity when it comes to neutralizing the dopamine overdose. Now I'll tell you why it is important. आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, उसके वजह से आपके ब्रेन में बहुत सारा डोपामीन हिट होता है और उसके वजह से हमें कोई भी और काम करने का मन नहीं करता. एंड इफ यू हैव सीन अ मूवी और you have spent like 1 or 2 hours on Instagram or browsing reels, then suddenly you feel everything becoming numb. छोटी छोटी चीजें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उठने का मन नहीं करता है, बैठने का मन नहीं करता है, लगता है कोई और कर लेगा. All of these things are a result of overload of information. I think the biggest problem in today's time is not that we don't want to do, it's the overload of information because of which our brain gets numb. When you do pranayam for such a long time, suddenly you will realize that the brain reactivates. वो डोपामीन लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं और फिर अंदर से आपको ऐसे अपने आप लगेगा कि ओ आई वांट टू मूव, आई वांट टू डू थिंग. ठीक है. तो कभी कभी जरूरी होता है. ये थोड़ा ओवरडोज था. अच्छा, कितने लोग कर पाए? हाउ मेनी ऑफ यू कुड एक्चुअली कीप योर आईज क्लोज्ड the entire time and could actually do the breathing? Type B for breathing in the chat box. Brilliant. I'm telling you, if you were able to do this, you are really powerful. आप किसी को भी बोलो कि भाई आंखें बंद करके 5 मिनट ब्रीदिंग करके दिखाए. आई कैन चैलेंज यू, इट इज सो टफ. इट इज सो टफ. और हमारे लिए भी अभी हम साथ में कर रहे हैं ना, इसलिए आसान है. मतलब हमने 12-13 मिनट नाडी शोधन प्राणायाम किया, बट ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल. तो अगर आपने किया है, यू कैन पैट योर सेल्फ, गुड जॉब ऑन दैट. एंड यू कैन ऑफ कोर्स यूज दिस रिकॉर्डिंग अगेन टू डू इट अगर आपको दोबारा से करना हो तो. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट 1 मंथ. वी आर गोइंग टू डू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस. तो वन हैबिट जो हमारा नवंबर का हैबिट है वो रहेगा कि हम लोग अगले 1 महीने हर दिन 15 मिनट ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे. हर दिन 15 मिनट आंखें बंद रखेंगे और जो समझ में आए ब्रीदिंग करेंगे. आई विल डेफिनेटली गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, मोर वीडियोस दैट यू कैन फॉलो अलोंग. But essentially, that is what we are going to do. And you will realize after a month that your brain works differently. एक महीना अगर रोज करोगे
आपका ब्रेन आपको नोटिस होगा कि कुछ अलग हो रहा है मेरे ब्रेन में। एक दिन में नहीं होगा, बट एक महीने में पक्का होगा। ठीक है? So that's it for today. If you do not have any questions, you can drop off. I will take some questions now. How my feet burning and pain related to pranayam? Some Ayurvedic doctor about it really worked for me. देखो, ब्रीदिंग से इन्फ्लेमेशन कम होता है शरीर में। तो अगर आपको कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा, तो दर्द या फिर बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो सकता है। Especially if you are a lady who is into that perimenopause or menopause period, तब आपके बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे होते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। सो इट्स अ ग्रेट आइडिया इफ यू कैन प्रैक्टिस ब्रीदिंग 15 minutes every day. Reactions of too much Instagram or YouTube, feelings are exactly as you said. Yeah, yeah, of course. It happens with me also sometimes. Is this program daily? This program is weekly. Sunday को हम लोग breathing करते हैं हर हफ्ते. What is the difference between deep breathing and abdominal breathing? No, it's the same. The names are different. Can brain fog be reduced by breathing? I want to ask you this question. Brain fog is basically overload of information. अभी आपको कैसा लग रहा है? देखो, मन में पहले से थोड़ी क्लैरिटी तो और आई होगी. Ignatius, the person who has asked this question. Does breathing help with tinnitus? Bhramri helps. Even I breathe nicely, my mind continues to think. Why don't you visit Northeast? We will, we will. After yoga, my joints pain more. Is that okay? No. If you're, see, there is a difference between a joint paining and the muscle paining. If your joints are paining, you should not do any exercise. If your muscles are paining, then you should continue. They are getting stronger. Having breathlessness and shortness of breath and constant headache, how to overcome? Please suggest. Nadi Shodhan Pranayam, you can try, but drink lots of water, check your vitamin levels, sleep on time. All of these things are also important. When I'm doing Nadi Shodhan, I'm getting a little sleep. If you have not rested properly, अगर नींद पूरी नहीं हुई है, तो breathing के बाद काफी नींद आती है, मन शांत हो जाता है ना. इस बॉक्स ब्रीदिंग कॉल्ड योगिक ब्रेथ? नहीं, योगिक ब्रेथ वो है जिसमें आप लोअर रीजन, मिडिल रीजन, अपर रीजन में सांस लेते हो और फिर वहीं से रिवर्स ऑर्डर में सांस छोड़ते हो. आई एम फेसिंग डिफिकल्टी टू ब्रीद इन थ्रू द नोज, आई हैव टू यूज द माउथ, व्हाट टू डू? नॉट श्योर इफ इट इज रिलेटेड टू वेदर चेंज. वंस इन अ while it's okay, no problem. Doing Nadi Shodhan, hand pains, holding 3 times, I took break. It's okay, no problem. Make yourself stronger. It's a sign from the body that you need to do more upper body strengthening. Is it good for perimenopause? Yeah, yeah, 100% yes. Which lock after Bhastrika do we continue breathing? It's called Moola Bandh or Kegel's hold. Again, very important to do. Anyone who is above 35 years of age, you should practice Kegel's hold. Anyways, you should practice, even if you're under 35. I feel extra cold in winter. My hands and feet remain very cold. What to do? Just wear warm clothes. Why do you not take practice of Ujjayi now? अगले संडे उज्जई का प्रैक्टिस ले लेंगे. ऐसी भी क्या बात हो गई? उज्जई इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. वो कंफ्यूजिंग हो जाता है. लोग इतने सवाल पूछते हैं, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि कम इंफॉर्मेशन इज बेटर समटाइम्स. Nadi Shodhan for 15 minutes in Vajrasan after your session is okay. Amazing. Please do that. Can cervical be cured by pranayam? Uh, can knee pain be cured by moving my hands? It's like asking this question. प्राणायाम से सर्वाइकल में थोड़ा मदद मिल सकता है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, बट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेक एंड रॉन्ग posture, it cannot be cured by pranayam. You have to do specific things for specific issues. Kindly teach Chandra Namaskar. We have already done that. कोई एक संडे को किया था. आप टीम से मांग सकते हो उसका वीडियो. Is there any solution for migraine? If your migraine is triggered because of stress, reduce your stress. That's all I can say. Can breathing heal sinus? Sinus is
something that everyone has. What you are asking is sinusitis. Any itis is inflammation. And I just said doing regular breathing practice helps you to reduce sinusitis. But that doesn't mean you should do whatever you want, sleep whenever you want, don't exercise. uh, वो सब कुछ एक साथ करना पड़ता है. कैन यू टीच वीरभद्रासन इन इजी फॉर्म फॉर दोज हु हैव नी पेन? देखिए, सब कुछ करना जरूरी नहीं होता है. अगर आप मान लो नी पेन है और आप वीरभद्रासन नहीं कर पा रहे हो, या जिसको नी पेन नहीं है और जो वीरभद्रासन कर पा रहा है, मैं आपको सही बता रहा हूं, उसके लाइफ में और आपके आपके लाइफ में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंज नहीं होने वाला है. एक कोई एक्स्ट्रा आसन आ गया या कोई एक एक्स्ट्रा ब्रीदिंग आ गई आपको, तो उससे कोई मैजिक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है. Whatever you can, if you do it consistently, that is when magic happens. Magic does not happen with getting more information. Okay? Can we do Surya Namaskar after the sunset? Yes, you can do that. Should not be a problem. The lotus pose when seated in a long position, especially for breathing, causing cramp and discomfort, especially in one leg. Is it normal? Yes, very normal. Sit in lotus pose more often and it will become normal for you. मेरे क्वेश्चन का आंसर कब दोगे? अब आपके क्वेश्चन, अगर यहाँ आप क्वेश्चन लिखते तो आंसर मिल जाता. इट वुड बी रियली गुड इफ इट कैन बी डन एट 8 a.m. ओके, लेट मी सी. Doctor has advised me for breathing exercise as I have asthma, but I have difficulty in breathing. My breathing gets hard reaching stomach. Yeah. So अगर issue है तो problem तो होगी, but if it is hard does not mean you should not do it. You should do it more often. Take your attention more frequently to your stomach region. Having scoliosis, can't do bending exercise properly. Should I do it? No, of course not. आफ्टर फीवर मुझे शोल्डर पेन है 1 महीने से. लिटरली मैं भगवान को जल नहीं चढ़ा पाती. प्लीज एडवाइस. चढ़ा पाता, ओके. तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है तो. Can we do yoga twice a day, like in the morning and the evening? I mean, is it okay or max one should do around 45 minutes? You can do it twice. कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो. For COPD, asthma, what breathing can be effective? Any breathing, just focus more on breath and try to do breath holds in a shorter formats. Box breathing करोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा. प्लीज सजेस्ट सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स. अभी जो बता रहा हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए भी है. मुझे वेट बढ़ाना है. खाओ, आप अच्छे से खाओ. Doing yoga can provide relief from gout. Is Chandra Bhedi pranayam in specific for high BP or entire body? How do you keep smiling always even if day doesn't go as per your way? Uh, Not really. Like, I also have bad days. Doesn't mean that I'm smiling all the time. But I try to smile as much as possible. That's kind of normal. मतलब मेरे पास एक बड़ा अच्छा सुपर पावर है, which is laugh for no reason at all. So I can laugh on extremely bad jokes, or rather, I crack bad jokes and laugh myself, even if others are not laughing. एंड चंद्रभेदी और गाउट के लिए जो आपने बोला, आई वुड से कि बहुत स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जाके बात करें. When breathing, my mind wanders how much I try. It's okay. It takes a lot of time. Your mind is like a small kid. It will take time for you to settle it down. डस्ट एलर्जी ठीक होगा ब्रीदिंग से? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर ब्रीदिंग सफिशिएंट नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइम पे सोने पे ध्यान देना पड़ेगा. अगर एलर्जी कंडीशंस है तो इम्यूनिटी उससे बढ़ती है. Can I reduce the incidence of nebulization for my kid by practicing breathing exercise? There is a possibility. I was a kid who used to take nebulizers now and then earlier. Now I hardly have to. Which nostril closed helps in constipation? Left one. Sorry. My life has changed after joining your classes.
I was not active at all, but now I'm very active and have become more positive. Thank you for taking these classes. You're just amazing. Thank you for joining the sessions and doing it with us. My husband is having incontinence problem due to removal of prostate. So how long or how many times we should do Kegel hold? You have to hold the Kegel for like say 3 to 4 seconds and repeat it 10 times. पूरा शरीर 7 दिन बहुत दुखता है, औषध चालू है लेकिन कुछ बेटर नहीं हो, तो ब्रीदिंग हो जाएगा क्या? हाँ, ब्रीदिंग कर सकते हो। ब्रीदिंग से ठीक हो जाएगा क्या? इसकी गारंटी नहीं होती है कुछ। ट्राई करके देखो, नुकसान तो नहीं होगा ना कम से कम। करके देखो, क्या पता हो जाए। I have a nerve issue in my shoulder. What exercise should I avoid? Like this. Forward bends and lifting your shoulder. जहां पे भी नर्व पिंच हो रहा है, इशू हो रहा है, वो आप नहीं करेंगे. Any recommendations for autoimmune problem? Have a better lifestyle. That's all I can say. Did you just burn? नहीं नहीं, हिचकी आई, किसी ने याद किया होगा. I have the same opinion. I am now energetic, active and very positive. Amazing. चलिए, आई थिंक आज के लिए काफी सवाल हो गए. अगर कुछ और सवाल रह गए हैं, I can tell you we have made 100 videos on our YouTube channel. You can check those and watch information. थोड़ी बेटर दे पाते हैं हम YouTube वीडियोस में. सो आप वहां पे जाओगे, सर्च करोगे तो ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी. That's it for today. We have for our regular members the face yoga session at 9:30 a.m. Bye bye.